Hello everyone, a warm welcome to all of you in the today's session on EduTap. And guys, welcome to the top 50 MCQs session in which we are going to discuss the top 50 MCQs from the month of December 2022. And guys, this is basically the last session of the top 50 MCQ session for this particular year, and I really believe that all of you are very excited for the today's session. So before starting the session, guys, let me all of you are requested to give a thumbs up in the comment section so that I can begin this particular session. If I'm audible and visible to all of you, please give a thumbs up to me in the comment section so that we can begin this particular session. So I'm getting some responses here from the students, so I'm audible and visible to all of you. That's really great. So guys, once again, a warm welcome to all of you in the today's top 50 MCQ session in which we are going to discuss the top 50 general awareness MCQs which are relevant for RBI Grade B, NABARD Grade A as well as the SEBI Grade A exam. So guys, before starting this session, I would like to tell you that this session is basically a revision session. See guys, this is the revision session of what you have covered in the past 1 week through the fast track sessions that we basically upload on the regular basis on our YouTube channel. And today we are going to discuss all of them in the form of multiple choice questions because these are the best way in order to revise everything that you have covered in the past 1 week. So hi Nilesh, Bruce, Suhas, Kanchi, I really believe that आप सभी की preparation for your exam बहुत ही अच्छी चल रही होगी. And today let us see that how many of you just remember all the important information that you have covered in the past 1 week. But before starting the session, guys, there is a very important announcement for all of you that we at EduTap are providing a comprehensive guidebook to all the aspirants who are preparing for RBI Grade B, NABARD Grade A and the SEBI Grade A exam. And guys, when I talk about these guidebooks are going to provide you the definitive answers to your queries which basically pops up in your mind about these three exams. See, now you must be thinking that what kind of queries these are. See, for any aspirant, the query can be about the body itself, and it can be about the exam, it can be about how to prepare to clear this particular exam. So for example, when I talk about the Reserve Bank of India, so what exactly is the developmental role that the Reserve Bank of India plays in the Indian economy? Now it can be about the exam. What is the eligibility criteria? What is the pattern? What is the syllabus of the exam? Now apart from that, the most important point is the preparation of this exam. So what are the different sources? How you should prepare for the exam? Everything is being covered in this comprehensive guidebooks that we are providing to you free of cost. Now guys, you must be thinking that although it is free of cost, so why should basically we read? See, as an aspirant, what exactly is the most important thing for you? It is your time, energy and effort, and these comprehensive guidebooks are going to save all of these three things. And now what you are required to do, you are just required to just use your time, energy and effort in order to prepare for the exam. Okay, so you are going to get definitive answers about all these queries. So what are you waiting for? Kindly download these guidebooks from the link given in the description of this particular session. Now let's move back to the session. And guys, here is the very first question to all of you. And the very first question is, which of the following state has got India's first Infantry Museum? See guys, this session is going to be rapid fire one. Let me tell you, तो आप सभी को जल्दी questions का आंसर करना होगा comment section के अंदर, and I will be discussing only those questions which are really very important and they basically required a detailed discussion from our end. Okay, so here is the very first question. So please tell me that what is the name of the state जहां पर इंडिया का पहला Infantry Museum open हुआ है. Let me give you a small hint that it is basically being launched in More district. ठीक है जी. And guys, when I talk about this particular museum now, this museum is going to showcase the infantry. It is going to showcase the infantry corps history from 1747 to 2020. A very important point. Not from the exam point of view, but from what exactly this particular museum is going to resemble. So guys, when I talk about the right answer to this question, the right answer is option D, that is Madhya Pradesh. So more in Indore, Madhya Pradesh, this particular India's first infantry museum has been launched. So I'm really glad to see. Hi Surendra, good morning. Suhas, Nilesh, Bruce, everybody has given the right answer to this question. Well done guys, you are high on energy today. Let's move on to the next question. Union Finance Minister has chaired the 48th meeting of the Goods and Services Tax Council. So जो GST ने जो GST मीटिंग हुई है 48th मीटिंग GST काउंसिल की, तो इसके अंदर हमने देखा कि जो कैटल फीड पल्सेस हैं उनकी ऊपर जीएसटी को यहाँ पर डिक्रीज किया गया है, और आपको मुझे बताना है कि कितना परसेंट से कितना परसेंट उसको डिक्रीज किया गया है. ऑप्शंस आपके सब ने बिल्कुल हैं.
और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, आप सभी को अपने स्कोर्स भी कैलकुलेट करने हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी आस्किंग योर स्कोर्स आउट ऑफ 50 दैट व्हाट एग्जैक्टली वाज योर स्कोर आउट ऑफ 50. ओके, सो नाउ लेट मी सी हु विल टेल मी द राइट आंसर. सो हियर गाइस द राइट आंसर to this particular question is option B, that is 5% to 0%. See, earlier the GST on cattle feed pulse husk was 5% and now it has reduced to 0%, that is nil. So here you can see the important information which has been given. Apart from that, the levy on the ethyl alcohol has also been reduced from to 5% from 18%. So I hope that this is clear to all of you. Let's move on to the next question. As per the 77th round of the Situation Assessment Survey of Agricultural Households conducted by NSO under the Ministry of MOSPI, ठीक है जी, which of the following has become the top state in average monthly income per agricultural household? तो मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि कौन सी वो हमारी स्टेट है जो कि हमारी टॉप स्टेट इन एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल household. So guys, when I talk about this particular survey, this is being conducted by NSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं उस particular state की जिसने कि टॉप किया है guys, the right answer is option D, that is Meghalaya. And I really glad to see that all of you are basically answering the questions correctly in the comment section. Really glad to see this. Now let's move on to the next question. Now the next question is on the United Nations Biodiversity Conference, a very important conference which has held recently in Montreal, Canada. So guys, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि वो कौन सी कंट्री है which is chairing the COP15 of United Nations Biodiversity Conference. Is it India, Canada, China, Mexico, Belgium? So question number 4 guys, please tell me what is the right answer. The country which has basically hosted the COP15 of the United Nations Biodiversity Conference. So let me tell you guys that in this particular conference, governments around the world have come together to agree on new goals, जिससे कि जो भी हमारे global actions हैं, they can just achieve by year 2030. और ये क्या करने वाले हैं? Basically, जो भी हमारा nature का loss हो रहा है at present, उसको हम रोक सकें और साथ ही साथ उसको उस impact को reverse कर सकें. That is why this particular conference has been held. So when I talk about the right answer, guys, it is basically option C, that is China. And here Bruce Wayne has answered the question correctly, that it has been chaired by China and held in Canada. Absolutely right. Nilesh has also given the right answer, that is option C, China. So यहाँ पर आप देख सकते हो that COP15 has concluded with a landmark agreement to protect 30% of the planet's lands, coastal areas and inland waters by the end of the decade. Now the next question. India's global rank in scientific publications according to the National Science Foundation Science and Engineering Indicators 2022 report. So guys, this particular report was being released recently and the question is on a very simple line, that is what is exactly India's rank in this particular report. See guys, let me tell you about this particular part, that this particular report has been launched by United States. ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, it is talking about National Science Foundation Science and Engineering Indicators 2022 report, and you are required to tell me that what is exactly the right answer to this particular question. So let me tell you that earlier India's position in this particular report was 7th. So that means option B is already been eliminated. Now what is the right answer to the question number 5? Absolutely right guys, it is option A, that is 3rd. So 3rd is the right answer, that is presently India's rank is basically 3rd. So let me tell you that in year 2010, India's rank in this particular indicators report is 7th and now it has reduced to 3rd in year 2020. Okay, I hope this is clear. Let's move on to the next question. So here you are required to tell me the name of the first African nation which has basically become a part of Artemis Accord. तो Artemis Accord की यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी हमारी अफ्रीकन नेशन है जिसने की जो पहला अफ्रीकन नेशन बना है to sign the Artemis Accord. So let me see who will tell me the right answer to this question. So अगर हम बात करें guys Artemis Accord की, it is a multilateral vision for future एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस. स्पेस के अंदर आने वाले टाइम में जो हम एक्सप्लोरेशंस करने वाले हैं उसका यूज करने वाले हैं, पीसफुल यूज करने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर पहला अफ्रीकन नेशन है जिसने कि आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है. लेट मी टेल यू दैट आर्टेमिस अकॉर्ड इट वाज बेसिकली लॉन्च्ड बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अलोंग विद नासा, और इन्होंने ये 8 नेशंस के साथ मिलकर इसको यहां पर क्रिएट किया था. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 6, एब्सोल्युटली राइट गाइस, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज रवांडा.
So Rwanda and Nigeria, these are the two countries. See, Rwanda and Nigeria, these are the two countries who have become the first African signatories of the Artemis Accord. So अगर हम बात करें कि presently कितनी countries हैं which have basically signed this accord, so basically there are 23 signatories. Okay. Now आपके सामने homework question ये है और आपको मुझे बताना है कि whether India has signed this Artemis Accord or not. So do tell me this particular information in the comment section. Okay, let us move on to the next question. So recently in December 2022, Union Minister for Road Transport and Highways has launched फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और आपको ये बताना है कि इसमें ये से कौन सी वो कंपनी है जिसने कि इसको लॉन्च किया है, लॉन्च किसके लिए किया गया है। इट हैज बीन लॉन्च फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एंड व्हाट इज बेसिकली द नेम ऑफ द कंपनी विच हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर पार्ट। So it's Bajaj Alliance, HDFC ERGO, ICICI Lombard, the New India Assurance Company Limited, State Bank of India. So here guys, it is a very direct question. The right answer is Bajaj Alliance, which is the right answer. Absolutely right. Nilesh has answered the question correctly. Nilesh, Priya, Bruce, Suhas, everybody is given the right answer. Well done guys. Let's move on to the next question. As per the data by One Letters, previously PGA Labs, which of the following banks continue to lead in the credit card segment? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर ये जो डेटा दिया है इस पर्टिकुलर लैब ने बेसिकली दो चीजों पे दिया है, ठीक है। एक तो दिया है हमारा क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड में कौन सी हमारी बैंक है जो कि लीड कर रही है, और एक है हमारा डेबिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन नंबर 8 में वो कौन सा बैंक है विच इज बेसिकली लीडिंग द क्रेडिट कार्ड सेगमेंट। सी गाइस, लेट मी टेल यू, व्हेन आई टॉक अबाउट द डेबिट कार्ड सेगमेंट, इट इज बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो दैट मींस यहां पर आपका एक क्वेश्चन, आप वैसे बेसिकली इट कैन बी अ चांस दैट एसबीआई कैन आल्सो बी इन द क्रेडिट कार्ड, बट नाउ इट इज बेसिकली नॉट द पार्ट ऑफ दैट। The right answer to the question is option B, that is HDFC Bank, ठीक है। तो डेबिट कार्ड की बात करें तो SBI is in the debit card and HDFC is in the credit card segment. Okay, I hope this is clear. Now moving on to the next question. So PTC India ने साइन किया है एक पैक्ट, और आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ किया है। सी बेसिकली इन्होंने कंपनी के साथ किया है जो कि बिलोंग करती है किस कंट्री से, ये आपको मुझे बताना है। इस कंपनी का नाम है ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन फॉर सप्लाई ऑफ 600 मेगावाट पावर फ्रॉम Indian power market. Okay, so guys, you are required to tell me that what is exactly the right answer here. The country जिसके साथ इसको basically किया गया है। Absolutely right guys, the right answer is option C, that is Bhutan. So I'm looking into the comment section, तो सभी बच्चे सभी क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। I'm really glad to see this, that you basically retain all the important information which is required to be retained from the exam point of view, and in the similar manner when you are basically continuing your preparation in this way, then you are really going to ace in the exam. Let's move on to the next question. Who among the following has been appointed as the chairperson of AERB, that is Atomic Energy Regulatory Board? A very easy question. Important appointments के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। चेयरपर्सन कौन बना है, चेयरमैन कौन बना है, एमडी सीईओ कौन बना है, ऐसी रिसेंट अपॉइंटमेंट जितनी भी हैं आपको याद करना होगा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस, द राइट आंसर इज दिनेश कुमार शुक्ला, दैट इज ऑप्शन डी, विच इज हु हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। एब्सोल्युटली the right answer is option D for the question number 10. Now moving on to the next question. So India ने recently create की है history by winning the T20 title for blind for third consecutive time. See guys, we all know about the Indian cricket team, but this is a very proud moment for all of you, that Indian cricket team, basically India's blind team, has basically won the third consecutive T20 title. And you know what? You are required to tell me in this question the name of the country जिसको इंडिया ने डिफीट किया है इन द फाइनल मैच। लेट मी सी दैट हु विल टेल मी द राइट आंसर, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन इंडियन टीम है उसके बारे में सभी को पता होता है, बट व्हाट एग्जैक्टली अबाउट इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम, बिकॉज दे हैव रियली मेड अस प्राउड बाय विनिंग द थर्ड consecutive T20 title. So absolutely right, I am getting the right answers. People are saying option C, Bangladesh, and that is the right answer, Bangladesh. Now guys, one more important point. See, although you know that India has basically won this World Cup, और यहाँ पर किस कंट्री को डिफीट किया है, बांग्लादेश को डिफीट किया है। Now you must be अवेयर अबाउट दैट इंडियन T20 क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है प्रेजेंट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जिस टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता है इसके हमारे कैप्टन का नाम क्या है। कैन एनीबडी टेल मी दैट? द पर्सन under whose captaincy the Indian team has basically created history by winning the third T20 title. Let me see who will tell me the right answer. So there is a little bit of silence here in the comment section. So let me tell you that who is basically presently the captain of the Indian team जिसके अंडर ये वर्ल्ड कप जीता गया है, that is अजय कुमार रेड्डी जी, ठीक है जी।
तो इनके कैप्टनसी के अंडर वी हैव बेसिकली वन दिस वर्ल्ड कप. ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So which of the following state has signed an MOU with Austin University to set up Austin Smart City of Knowledge in the state with an investment of USD 42 billion? तो यहाँ पर काफी सिंपल है क्वेश्चन. जब भी MOU के ऊपर आएगा आपको क्या याद रखना है? वी ऑलवेज टेल यू, सबसे पहले द नेम ऑफ द पार्टी. सेकंड थिंग इज what is exactly the aim of that particular MOU. ठीक है, तो पार्टी की बात करें, इसमें से वो एक स्टेट है और साथ में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी इज द सेकंड पार्टी. व्हाट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर MOU? दैट इज हम इस MOU के अंदर एक ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं. उसके लिए इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की है? दैट इज USD 42 बिलियन डॉलर्स. और आपको बताना है उस स्टेट का नाम जिसने कि MOU साइन किया है. एंड गाइस एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश. सो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर. ऑल ऑफ द पीपल हैज गिवन द राइट आंसर. सुहास, नील, ब्रूस, एवरीबॉडी इज रॉकिंग टुडे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इसने कोलैबोरेट किया है. आपको बताना है कि कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है टू लॉन्च पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट. पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट एक ग्रुप इंश्योरेंस प्लान को रिसेंटली लॉन्च किया गया है और उसके लिए एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ यहां पर MOU साइन किया है, पार्टनरशिप किया है 197 कम्युनिकेशंस ने. दैट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ द पेटीएम. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर, इट इज ऑप्शन ई, दैट इज HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी. सी गाइज, these are a very direct questions. I am just telling you the right answer and moving ahead, and you guys are also required to be very quick in answering such kind of questions. Okay, now moving on to the next question. Annual report of CPGRAM for the year 2022 has been released. और आपको बताना है कि as per the report जो एवरेज डिस्पोजल टाइम है ना ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने का, वो इंप्रूव हुआ है. अर्लियर इट वाज 32 days in 2021, but what is exactly the number of days in 2022? That is what you are required to tell me. I am marking the star here guys because this question can be asked in the exam. Question number 14, it is a very important question. CPGRAM, what exactly it stands for? It stands for Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System. ठीक है जी, ये वो रिपोर्ट है और ये एक प्लेटफॉर्म है which is available to all the citizens of India where they can basically 24/7 they can use this platform to lodge their grievances regarding any delivery service. और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कितना क्या हमारा नया नंबर है, बेसिकली अर्लियर इट वाज 32 days and now when I talk about the right answer, it is option D, that is 27. 27 is the right answer to this question. So all the people who are basically saying option E, see guys, option E is not the right answer. The right answer is option D. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18,19,104 grievances रिसीव किए थे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने. ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें से कितने केसेस को रिड्रेस किया गया है, डिस्पोज किया गया है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज द्वारा, इट वाज 11,29,642, इट वाज 4,38,455 बाय विच वाज बेसिकली डन बाय स्टेट्स एंड यूटीज. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर ये क्वेश्चन था, बेसिकली 32 डेज से इट हैज रिड्यूस्ड टू 27 days. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज. एब्सोल्युटली राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे ये किस डेट को मनाया जाता है? अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 28 December. इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे 28 December. और सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया इन द कमेंट सेक्शन. आई एम रियली ग्लैड टू सी. Moving on to the next question. So next is India's rank in the Social Progress Index. See guys, Social Progress Index 2022. Whenever such kind of index comes, क्या चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या questions आपको पूछने चाहिए when you see such kind of index in your news article? First of all, इसको रिलीज किसने किया है? Second important thing is, अगर पूछ रहा है कि इंडिया का रैंक क्या है, that is a very important thing. Next important thing is about this particular index. इस इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. एंड अदर वन इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स, देन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, देन रिकमेंडेशंस. तो जब हम बात करते हैं कि इंडिया की रैंक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को लॉन्च किसने किया है. ये जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव. ठीक है जी, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने इसको लॉन्च किया है. इंडिया की रैंक अगर हम बात करें, इंडिया की रैंक है इसके अंदर 110th. और जब हम बात करते हैं वो कंट्री जिसने इसको टॉप किया, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी रिटन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज नॉर्वे. तो नॉर्वे ने इसको टॉप किया है. इंडिया की बात करें, इंडिया वाज रैंक्ड 110th इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स व्हिच इज बीन लॉन्च्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस and social progress imperative. I hope this is clear guys. Absolutely right, all of you have given the right answer. Now moving on to the next question. 3 new cultural sites from India have been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. So India, अब जब 3 ये नई कल्चरल साइट्स को हमने ऐड किया है टू द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, तो आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द न्यू नंबर
What is the total number of sites that India is presently having on the UNESCO tentative list of the World Heritage Sites? And here guys, once again the right answer to this question is option A, that is 52. और हम बात करते हैं अगर कि वो 3 sites कौन सी हैं जिनको अभी recently add किया गया, that is very very important point that must be covered. That is Vadnagar town and Modhera Sun Temple, which are basically in the Indian state of Gujarat. Now the next important point is Unakoti sculpture, which is in Tripura, has been added to the UNESCO's tentative list of World Heritage Sites. और यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर presently क्या नंबर है, that is 52 sites after the addition of these 3 towns. ठीक है, after the addition of these 3 sites to the World Heritage Site list. Okay, I hope this is clear. Next question. इंडिया का पहला green dash brand जो कि कल्याणी फेरेस्टा, सी कल्याणी फेरेस्टा इज बेसिकली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डैश ब्रांड, और ये फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है आउट ऑफ दीज ऑप्शंस व्हिच आर बीइंग गिवन हियर. और इसको लॉन्च किसने किया है? इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कल्याणी ग्रुप ऑफ कंपनीज. तो कल्याणी ग्रुप ऑफ कंपनीज इसको लॉन्च किया है और आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द नेम. ये बेसिकली जो ग्रीन ब्रांड है ये किस चीज का ब्रांड है? एब्सोल्युटली राइट गाइस, द राइट आंसर इज स्टील. तो इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड दैट इज कल्याणी फेरेस्टा. सो सबसे पहली बार कोई चीज हो रही है, इंडिया की पहली है, वर्ल्ड की पहली है, एशिया की पहली है. आपको ऐसी चीजों को ध्यान देना होगा बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following universities has ranked first in India as per the UI Green Metric World University Rankings 2022? See guys, when I talk about these rankings, as the name says, Green Metric World University Ranking. सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको लॉन्च कौन करता है, it has been launched by UI guys. Here UI stands for Universitas Indonesia. ठीक है, और दूसरी बात है कि ये बेसिकली अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, दिस इज द पैरामीटर्स व्हिच आर यूज्ड आर first of all the green campus as well as the environment sustainability which is being adopted by that university. तो इसके बेसिस पर उसको बेसिकली रैंक किया जाता है. इंडिया की अगर हम बात करें कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप पर आई, एब्सोल्युटली राइट सुहास एंड नील, इट इज बेसिकली ऑप्शन डी, दैट इज मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी कि कौन सी स्टेट के अंदर ये कैंपस लोकेटेड है जिसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जो कि टॉप पर आई है? सी गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट द university which has topped across the world, it is basically Wageningen University and Research which is from Netherlands. ठीक है जी, नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी है जिसने कि इसके अंदर टॉप किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर हम बात करते हैं अपनी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की, इट वाज ऑन द 121st रैंक इन द वर्ल्ड एंड इट वाज ऑन द फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया. व्हेन आई टॉक अबाउट वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज बेसिकली लोकेटेड इन कर्नाटका. तो ये सभी तरीके से आपको पढ़ना होगा, आपको एक हर एक एस्पेक्ट देखना होगा क्वेश्चन का, एंड देन यू आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू सी द क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन इन द एग्जाम. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो हियर ब्रूस वाज making a guess that is Sikkim, but Sikkim is not the right answer, it is Karnataka. So Neil Suhas have given the right answer, that is Karnataka. Well done. Now let's move on to the next question. So SEBI board ने recently approve किया है phasing out of the shares buyback through stock exchanges. The board has also approved the increase in the minimum utilization of the amount earmarked for a buyback through stock exchanges from the existing -% to -%. तो यहाँ पर दो fill in the blanks है और आपको बेसिकली बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठता है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बोर्ड ने रिसेंटली अप्रूव किया है फेजिंग आउट ऑफ शेयर्स बायबैक. सी गाइस, जब कंपनी अपने ही शेयर्स जो उसने मार्केट प्लेस में दिए हैं वहां उनको वापस से रीपर्चेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयर बायबैक. ठीक है, और ये बेसिकली होता है थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज. और यहां पर आपको मुझे बताना है बेसिकली व्हाट इज बेसिकली द न्यू क्राइटेरिया, मतलब ये जो हमारा इन्होंने नया वो निकाला है मिनिमम यूटिलाइजेशन में जो इंक्रीज किया है वो क्या है. एंड एब्सोल्युटली राइट गाइज, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज 50% to 75%. एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, और ये बेसिकली अगर हम कहें ये कब तक अचीव होगा, दिस विल बी अचीव्ड बाय मार्च 2025. ठीक है, और ये जो नया प्रोसेस है ना, इसके लिए एक नई सिंगल विंडो यहाँ पर और लॉन्च की है सेबी ने जिसके अंदर ये बायबैक प्रोसेस होंगे तब तक. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स क्वेश्चन. क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल in collaboration with the online PSB loans and SEBI has announced the launch of fitrank. ठीक है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग लॉन्च की है और बेसिकली आपको बताना है कि किसको ये रैंक करने वाला है. इन द फिट रैंक रैंकिंग्स व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय ट्रांस यूनियन सिविल, ये किसको रैंक करने वाला है? Absolutely right guys, it is option D, that is MSMEs. So fitrank is going to leverage the details which is available with the GST filings, बैंक स्टेटमेंट्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड अ रैंकिंग मॉडल फॉर एमएसएमई लेंडिंग. तो एमएसएमई
को हम लेंड करते हैं पैसा, तो उसके लिए उनकी एक रैंक बनाई जाएगी जिसके तौर पे दे कैन बेसिकली सी दैट हाउ मच दे आर, वेदर दे आर एबल in order to pay back the loan or not. ठीक है, so that is why this particular ranking is being launched. I hope this is clear. Now the next question. Switzerland based E2S Power, a developer of dash energy storage solution, और इंडिया की जो IPCL है, that is India Power Corporation Limited, उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है और आपको बताना है बेसिकली कि ये कौन सी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन के लिए हुआ है। ठीक है, ये जो हमारी E2S पावर कंपनी है ये कौन सी एनर्जी में डील करती है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द क्वेश्चन नंबर 2022। एब्सोल्युटली राइट, इट इज थर्मल। तो पर्पस हम उसका अगर हम बात करें, दे आर बेसिकली गोइंग टू सेट अप अ 250 किलोवाट आवर पायलट थर्मल एनर्जी स्टोरेज यूनिट व्हिच विल बी ऑपरेटेड इन इंडिया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Fifth Scorpion class submarine Wagir of the Project 75 has been delivered to the Indian Navy. और आपको ये बताना है कि इसको बेसिकली इसमें से कौन सी कंपनी है जिसने मिलकर बनाया है इन कोलैबोरेशन विद द MS नेवल ग्रुप फ्रांस। ठीक है, तो MS नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ मिलकर इसमें से कौन सी कंपनी है जिसने कि इस वागीर को बेसिकली बनाया है। लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द अदर Scorpion submarines. So when see guys this list you must know because the P75 project is a very important project. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं उनके नाम की, so it is basically INS Kalaveri, INS Khanderi, INS Karanch, we have Vela, we have Wagir and we have वाक्षीर। ठीक है, तो ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑप्शन ए, दैट इज मैजगॉन Dock Shipbuilders Limited. That is the right answer. So everybody has given the right answer. Absolutely right, guys. Now the next question. Who among the following is the only Indian to feature on British magazine list of 50 greatest actors? Very easy question, very direct question. Right answer is option C, that is Shah Rukh Khan. Now the next question. In Space has signed an MOU with the QNU Labs. और उसका सी वी ऑलवेज टेल यू दैट वेन एवर देयर इज एन MOU, व्हाट इज एग्जैक्टली देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नेम ऑफ द टू पार्टीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज what is exactly the aim of that MOU? The aim is to develop satellite QKD products. तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन ये है, किसी आपको एम पता है QKD प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्च करना है, बट व्हाट एग्जैक्टली QKD के अंदर K की फुल फॉर्म क्या है ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। सी गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट द QKD फुल फॉर्म, इट स्टैंड्स फॉर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ई, दैट इज की। एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप, और आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। सी अगर हम बात करते हैं इस पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप की, इट हैज बीन लॉन्च्ड इन चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई के अंदर लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने, और आपको बताना है कि उसका नाम क्या है शिप का। वेरी इजी क्वेश्चन एंड ऑन अ वेरी इजियर लाइंस, एंड इसी लाइन पर आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं एग्जाम के अंदर। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज INS अर्नाला। ठीक है, इसको बिल्ड किसने किया है? इसे बिल्ड किया है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता के अंदर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. गरुड़ एरोस्पेस ने एक MOU साइन किया है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंपनी के साथ MOU साइन हुआ है टू पावर ड्रोन्स विद एडवांस डिजिटल कैपेबिलिटीज। एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज कॉग्निजेंट इज द नेम ऑफ द कंपनी जिसके साथ ये MOU साइन किया है गरुड़ एरोस्पेस ने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे जिससे कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके, और उसके बाद वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग योर स्कोर्स एज वेल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने डिसाइड किया है टू एक्वायर मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹2850 करोड़? क्या है उस कंपनी का नाम जिसने की रिसेंटली डिसाइड किया है दैट दे विल बी एक्वायरिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। दैट इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है 24 कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स, और आपको ये बताना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द टोटल वर्थ ऑफ दीज 24 capital procurement proposals. Is it option A, B, C, D, and E? Please choose the right answer and tell me in the comment section. So I'm getting the right answers from the people here to the question number 29. Absolutely right. The right answer is option B, that is 84,328 crores is the right answer. The total worth of 24 capital procurement proposals. Now the next question. See guys, this question is a very important question once again. ठीक है, because once again there is something which is having a first in its question. ठीक है, तो the name of the person is Sanya Mirza, who is in the news. She is not a lawn tennis player. She is basically the India's first Muslim woman fighter pilot. ठीक है, she is India's first Muslim woman fighter pilot, and you are required to tell me that from which state she belongs to.
So very easy question for all of you. Absolutely right. The right answer to the question number 30 is option E, that is Uttar Pradesh. So Uttar Pradesh is the right answer to this question. Kindly remember this question because it can be asked in the exam. Now the next question. To enable the fundraising through the social stock exchanges for the non-profits, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है नया सिक्योरिटी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल विच हैज अ मिनिमम इश्यू साइज। तो आपको बताना है कि जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड है ये बेसिकली इसका मिनिमम साइज क्या रहने वाला है। सी गाइस, सोशल स्टॉक एक्सचेंज विच बेसिकली गिव्स द अपॉर्चुनिटी विच अलाउज द सोशल एंटरप्राइजेस टू रेज देयर फंड्स। ठीक है, तो फंड रेजिंग के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं सोशल एंटरप्राइजेस, और आपको बताना है कि उसके लिए मिनिमम इश्यू साइज फॉर ZCZP दैट इज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल वो कितना होने वाला है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ₹1 करोड़। एब्सोल्युटली राइट, शाश्वत हैज गिवन द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, 1 करोड़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Tata Power has received rupees 450 crore credit facility for which among the following countries MUFG Bank. तो ये जो MUFG बैंक के साथ रिसेंटली टाटा पावर ने क्रेडिट फैसिलिटी ली है 450 करोड़ की, और आपको बताना है कि ये बैंक कौन सी कंट्री के साथ बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। टू द क्वेश्चन नंबर 32 एंड द राइट आंसर इज जापान। ठीक है, तो इट इज अ जापानीज बैंक विद विच टाटा पावर हैज basically received the 450 crore credit facility. That is the right answer. Now the next question. So here guys, the question is basically on Bal Sahitya Puraskar, and it has been given in Santali to dash for his book Hapan Mai. So this is the person who has basically received, this particular person has received this particular award in Santali, that is a Bal Sahitya Puraskar, for his book that is Hapan Mai, which he is basically carrying in this particular picture, and you are required to tell me the name of this person who has basically received this particular award. Absolutely right guys, the right answer is option D, that is Ganesh Marandi is the right answer. So Ganesh Marandi ji को recently ये बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है for his book Hapan Mai. ठीक है, now the next question. So you are required to tell me the name of the entity which has won the prestigious Griha Exemplary Performance Award 2022, which is the top national level green building award. See, basically this is a green building and this campus is a very green, and this is basically located in New Delhi. ठीक है जी, और आपको मुझे बताना है कि ये basically कौन सी बिल्डिंग है जिसको ये दिया गया है. Basically you are required to tell me the headquarter. As I have told you that it is basically located in New Delhi. Now so many options have already been eliminated from this particular list, and when I talk about the right answer, absolutely right, it is option A, UIDI headquarter building. So here Bruce or Nilesh has given the right answer, that is option number A. Suhas has also given the right answer. Shashwat has also given the right answer. I am really glad to see this. Now the next question guys. So you are required to tell me the name of the country जो कि अभी ranked है top position पर in the FIFA for the year 2022. A very easy question, a halva question for all of you. I know that you all are soccer lovers. So now the right answer is Brazil, which is ranked on the first position in the FIFA for the year 2022. Absolutely right. Now the next question. International Finance Corporation, which is a member of the World Bank Group, it has lent USD 400 million to which of the following companies to boost green affordable housing finance. See guys, green affordable housing finance को boost करने के लिए वर्ल्ड बैंक का जो मेंबर है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसने 400 मिलियन US$ लेंड किए हैं, और आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सी हमारी मिनिस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये पर्टिकुलर अमाउंट दिया गया है. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग, एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज HDFC इज द राइट आंसर. ब्रूस वेन हैज गिवन द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन जिसने की बुक लिखी है for which he has received the Rabindranath Tagore Literary Prize for year 2021-2022. You are required to tell me the name of the author. The book basically which is in the news for which that person has received the award is Anthropocene Climate Change Contagion Consolation. ठीक है, तो ये basically इस book का नाम है. When I talk about the right answer, the person who has written this book, it is basically Sudeep Sen, who has received this award for the year 2021-2022. So guys, these awards, these awardees, and the reason why they have received the award, if they have written a book, what is the title of the book, everything you are required to remember from the exam point of view. Now the next question. International Monetary Fund ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की ग्रोथ रेट को इन द करंट फिस्कल. व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी गाइस. इट डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, बट दीज आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो IMF ने अगर ये प्रोजेक्शन दी है और आपको मुझे बताना है कि बेसिकली व्हाट इज एग्जैक्टली द ग्रोथ रेट फॉर इंडिया for fiscal year 2023, and here absolutely it is option D, that is 6.8%. ठीक है,
तो 6.8% is for this fiscal. When I talk about the next fiscal year, it is 6.1%. That is the right answer. Now the next question. So Ministry of Defense ने recently नोट किया है, basically approval दिया है to procure 120 प्रलय ballistic missiles for the armed forces. और आपके सामने क्वेश्चन है मिसाइल के ऊपर, ठीक है. See guys, when I would like to tell you here that whenever you find such kind of current affairs, always try to just go little bit depth in that, ठीक है. For example, when I talk about this question, the question is basically about the Pralay ballistic missiles. तो उनको 120 ballistic missiles को इंडिया प्रोक्योर करने वाली है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दिया है. सो नाउ the question can also become that कि कौन सी मिसाइल के लिए क्या है, but second question can also come on the प्रलय मिसाइल as well. और उसी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या प्रलय मिसाइल की रेंज है, and here guys the right answer is option C, that is 150 to 500 किलोमीटर. that is basically the range of this, ठीक है. अगर हम उसकी स्पीड की बात करें, स्पीड is 2000 किलोमीटर पर आवर. Absolutely right, everybody is given the right answer. Priya, Suhas, Nilesh, that is option C, that is 150 to 500 kilometers. Now the next question. You are required to tell me the name of the drone manufacturer which has received the type certification and remote pilot training organization approval from DGCA for its indigenously designed Kisan drones. See guys, a very important point. किसान ड्रोन्स को डिजाइन करने वाली है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसको यहाँ पर अप्रूवल मिला है डीजीसीए से. किस चीज का अप्रूवल मिला है? टाइप सर्टिफिकेशन एंड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो आपको मुझे बताना है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर drone manufacturer which has received this approval? And here guys it is option D, that is Garud Aerospace. Absolutely right, all of you have given the right answer to the question number 40, that is Garud Aerospace. Once again let me tell you the name: Nilesh, Shashwat, Suhas, Bruce, Priya, Bhanu Teja, everybody is given the right answer. Well done guys. Now the next question. Which of the following states and UTs has celebrated the Losar Festival? Losar Festival यहाँ पर कौन सी स्टेट के अंदर मनाया जाता है? A very simple question. So when I talk about the right answer, this particular festival is being celebrated every year in Ladakh. So that is the right answer. Now the next question. Veer Bal Divas was celebrated recently, and you are required to tell me the date on which this particular Divas was being celebrated. ठीक है जी. So Veer Bal Divas को recently celebrate किया गया था, and it was celebrated on 26th of December, and it is being celebrated in the honor of 4 Sahibzadas of Guru Gobind Singh Ji who were martyred in the 17th century. Okay, now the next question. As per the report by Controller and Auditor General of India for the financial year 2020-2021, you are required to tell me that the botanical gardens has failed to conserve threatened plants despite having a budget of dash. See guys, the question is basically on a very simple lines. It is basically talking about the current development. तो CAG ने recently report निकाली जिसमें कहा कि botanical garden basically fail हुए हैं to conserve the threatened plants. बट यहां पर क्वेश्चन है उनके बजट के ऊपर कि उनको कितना बजट एलोकेट हुआ था, एंड उसके बावजूद ये फेल हुए. तो व्हाट इज एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर बजट? दैट बजट इज बेसिकली ऑफ 48 करोड़ रुपीस. एब्सोल्युटली राइट, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज 48 करोड़. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the United Kingdom based Center for Economics and Business Research, India's growth trajectory will help it to rise to which of the following spots by 2037 on the World Economic League table? See guys, a very easy question. इस question को छोटे छोटे parts में divide करें, then we will get the whole analysis. That question के अंदर वो पूछ क्या रहा है? It is asking basically कि by 2037 वर्ल्ड इकोनॉमिक्स लीग टेबल के अंदर इंडिया कौन से नंबर पे होगी. दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. इस रिपोर्ट को किसने दिया है? इस रिपोर्ट को दिया है यूनाइटेड किंगडम ने, और आपके सामने क्वेश्चन ये है कि बेसिकली किस स्पॉट पर इंडिया होगा. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज थर्ड स्पॉट. ठीक है जी, एब्सोल्युटली राइट, ऑल ऑफ यू गिवन द राइट आंसर, दैट इज थर्ड स्पॉट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो टाटा स्टील एंड ट्यूटर हाइपरलूप, उन्होंने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है टू डेवलप हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, एंड द फेज 1 वर्क विल टेक प्लेस ऑन द 50 मीटर टेस्ट ट्रैक. और ये जो 50 मीटर का टेस्ट ट्रैक है, ये इसमें से कौन से इंस्टीट्यूट्स के अंदर लोकेटेड है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. इट इज IIT मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु और NIT वारंगल. दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So guys, question number 45, what is the right answer? टाटा स्टील ने यहाँ पर साइन किया है MOU ट्यूटर हाइपरलूप के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, और ये जो टेस्ट ट्रैक है 50 मीटर का, ये है IIT मद्रास के अंदर. दैट इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following has been appointed as the CEO and chairman of the railway board? I have already told you that such kind of important appointments are very important to be covered. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं. क्या नाम है उनका? ही इज बेसिकली अनिल कुमार लाहोटी. दैट इज द राइट आंसर. So which of the following organizations
has launched the project Climate Resilient Livelihood for Disaster Prone Region of Uttarakhand, which is helping Chamoli's village फाइट क्लाइमेट चेंज। तो यहां पर आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और क्यों लॉन्च किया है। चामोली विलेज को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए, वो उससे फाइट कर सके, इसके लिए बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये लॉन्च किया है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी गाइस। एंड हियर द राइट आंसर इज एसबीआई फाउंडेशन एंड द हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन, दैट इज द राइट आंसर। तो दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। सो ऑल द पीपल हु आर बेसिकली सेइंग दैट the right answer is option B, that is only Himalayan environmental, guys, this is not the right answer. Both option A and B are the right answers, ठीक है। इन्होंने मिलकर collectively इस particular project को launch किया है। I hope this is clear, absolutely. So Shashwat, Nilesh and Priya have given the right answer, absolutely right. Now the next question. President of India has signed a notification to amend allocation of business rules to place online gaming under. तो ऑनलाइन गेमिंग को बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यहां पर किया है, एज पर द नोटिफिकेशन विच हैज बीन साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपको बताना है कि ऑनलाइन गेमिंग को अब किसके अंडर प्लेस किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इसको प्लेस किया गया है। एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो these kind of questions we have already always seen in the exams, and that is why they are really very important to be covered. Now the next question. So Tamil Nadu government has launched India's first project for the conservation of dash at a cost of 25.14 crores. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट इंडिया का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है। सी, अब क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, क्वेश्चन कैन बी कि कौन सी स्टेट है जिसने कि इंडिया का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, या फिर ये जो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ये कहां पर हुआ है, व्हाट इज द कॉस्ट और किसकी कंजर्वेशन के लिए हुआ है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी इन द पिक्चर हियर गाइस, द राइट आंसर इज बेसिकली ऑप्शन डी, दैट इज नीलगिरी ताहर इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली। सो ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। Now moving on to the next question, and guys, this is the last question of our today's session, and I want all of you to give the right answer to this question. And the right answer, and the question is Black Sea Grain Initiative. See, Black Sea Grain Initiative recently news के अंदर था, और आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सी कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। सी गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, वी ऑल नो कि ड्यू टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, तो जो भी ग्रेन्स थे हमारे वो ब्लैक सी से नहीं आ पाते थे फ्रॉम द यूक्रेन, बट यहां पर अब एक ट्रीटी साइन हुई, एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत यूक्रेन के 3 पोर्ट से ये ब्लैक सी के थ्रू ग्रेन्स आ सकेंगे। दैट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहां पर ग्रेन्स की बहुत ज्यादा कमी है, and basically people are dying of hunger, and that is why to basically avoid that particular situation this particular agreement has been signed. And now I think that the right answer, you can absolutely tell me, it is option E, that is Ukraine, Turkey and Russian Federation, जिनके बीच में ये agreement हुआ है, that is the right answer, absolutely right. So all of you given the right answer, I'm really glad. Now you are required to tell me that what exactly your scores are out of 50 in this particular session, because these are very very important to be discussed, because after seeing your scores only you will be analyzing that what exactly your strength areas are, what exactly are your weak areas. तो जो आपके strength areas हैं उनको हमें strength बनाए रखना है, और जो weak areas हैं उनको find out करके हमको उसके ऊपर काम करना है जिससे कि वो भी हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सके, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर गाइज। एंड नाउ इफ यू आर न्यू टू यूट्यूब चैनल गाइज, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द कोर्सेज एंड वीडियोस ऑफर्ड बाय अस, एंड यू कैन आल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट द एक्सेस टू द पीडीएफ ऑफ द सेशंस। सो आई एम गेटिंग द स्कोर्स ऑफ द पीपल हियर। ब्रूस इज सेइंग 32.5, इट इज अ गुड स्कोर हियर गाइज। सो सी, whatever your score is, see, this is really very important for you to analyze कि कौन से questions हैं जहां पर आप फंस जाते हो, जो आपको information याद नहीं रहती है, तो उन questions को, उन तरीके की informations को आप note down कीजिए, और whenever you are reading any new news article, kindly give focus on such kind of news articles, because that's how you are basically going to मेक इट योर स्ट्रेंथ फ्रॉम योर वीक एरियाज। जो आपका वीक एरिया है उससे आप उसको स्ट्रेंथ बनाएंगे, एंड दैट्स हाउ यू आर रियली गोइंग टू एस इन द एग्जाम एज वेल। सो गाइज, इफ यू आर ऑल्सो हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी, व्हाट यू कैन डू, you can just share your queries right now in the comment section. You can share your queries to us on hello@edutap.co.in, and you can also call us at 8146207241. So as I can see here that in the comment section there are no queries here, so I think I can conclude the session. So guys, I will meet you now next year on the next Saturday. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy